Sarah wants to study the toxic effect of two different types of insecticides M and N on insects in stored grains. The given table shows the experimental setup. Container X insecticide M, container Y insecticide N. Amount of grain दोनों में सेम है, that is 200 grams. Amount of insecticide applied भी दोनों में सेम है, that is 0.25 ml. Number of insect treated दोनों में सेम है, that is 10. To complete the experimental setup, Sarah should design the control group by treating insects with. As you know, experimental group and control group are treated exactly alike except for the variable being tested. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? Two different types of insecticides M and N. ऑप्शन ए, बी और डी में वेरिएबल मौजूद है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, डिस्टिल वाटर. कंट्रोल ग्रुप में हम क्या यूज़ करेंगे इंसेक्टिसाइड की जगह? डिस्टिल वाटर, और उसका अमाउंट भी सेम रहेगा, दैट इज 0.25 ml. मीन्स ऑप्शन सी, डिस्टिल वाटर इज द करेक्ट आंसर. Next question. The given graph shows the number of students having different blood groups in a class. If 3 students with blood group A and 4 students with blood group B leave the class while 2 students with blood group O join the class, then which blood group students are present least in number? Number of students और types of blood group हमें given है. A ब्लड ग्रुप के स्टूडेंट्स टोटल 25 हैं. अगर 3 स्टूडेंट्स लीव कर देते हैं तो 25 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 22. मीन्स अब क्लास में 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है. ब्लड ग्रुप बी 20 स्टूडेंट्स का है. 4 स्टूडेंट्स लीव कर देते हैं क्लास को, तो मीन्स 20 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 16. मीन्स अब 20 में से 4 स्टूडेंट्स निकल गए, मीन्स 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका क्लास में ब्लड ग्रुप बी है. टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ था. 2 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है. 15 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 17. मीन्स अब क्लास में 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है. हमसे लीस्ट पूछा गया था, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ब्लड ग्रुप बी. दैट्स वाई ऑप्शन सी, ब्लड ग्रुप बी इज द करेक्ट आंसर. The diagram below shows a plant cell when placed in an isotonic solution. If the same cell is placed in a hypertonic solution for 2 hours, then the state of the plant cell is diagrammatically represented as is. मीन्स हमें करेक्ट डायग्राम आइडेंटिफाई करनी है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद प्लांट सेल की. एज यू नो, a hypertonic solution has relatively more solute. In a hypertonic environment, a plant cell loses water and cytoplasm shrinks. The shrinking of cytoplasm is called plasmolysis, जो करेक्टली ऑप्शन सी रिप्रेजेंट करा है. दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमें साइटोप्लाज्म श्रिंक हुआ हुआ नजर आ रहा है. मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेल organelle which forms a network of interconnecting canals and continues with the nuclear envelope is identified as the, as you know, endoplasmic reticulum is a network of interconnected channels that extends from cell membrane to nuclear membrane. That's why given options में से जो correct answer है वो है option D, that is endoplasmic reticulum. Means option D, endoplasmic reticulum is the correct answer. Next question. In the cell, Golgi apparatus lies near the endoplasmic reticulum because Golgi apparatus, given options में से जो correct answer है वो है option C, because Golgi apparatus modifies and packages proteins produced by the endoplasmic reticulum. Means option C is the correct answer. Next question. The diagram that represents phloem vessels in plants is, as you know, phloem tissues contains sieve tube cells and companion cells, जो हमें ऑप्शन ए में नजर आ रहे हैं. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी, सी, डी
जाइलम वेसल्स को रिप्रेजेंट करे, फ्लोएम को नहीं। सिर्फ ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनेली विच इज एब्सेंट इन द रूट हेयर सेल इज गिवन। ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। एज यू नो, chloroplasts are the sites of photosynthesis in eukaryotes. रूट हेयर सेल में न्यूक्लियस, वैक्यूल और सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, दैट्स वाई ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स डिफरेंट ट्रांसपोर्ट mechanisms across the plasma membrane. In the given diagram, facilitated diffusion is represented as you know, many molecules do not diffuse freely across cell membranes because of their size or charge. Such molecules are taken into or out of the cells with the help of transport proteins present in cell membranes. When a transport protein moves a substance from higher to lower concentration, the process is called facilitated diffusion. The rate of facilitated diffusion is higher than simple diffusion. हमें Y और Z में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नज़र आ रहे जो हेल्प करे मूवमेंट में, दैट्स वाई ऑप्शन सी जो Y और Z को रिप्रेजेंट कर रहा है इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्शन दैट इज करेक्ट about the number and function of vacuole in an animal cell is। नंबर मल्टीपल होते हैं वैक्यूल के एनिमल सेल में, करेक्ट फंक्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑप्शन सी है, दैट इज स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स। दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी में थे, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द mitochondria of a cell, the presence of inner membrane with large surface area is significant for the given options में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज occurrence of chemical reactions, means option D is the correct answer. As you know, mitochondria are double membrane bounded structures found only in eukaryotes. These are the sites of aerobic respiration and are the major energy production centers, also called powerhouses. The outer membrane of a mitochondrion is smooth, but the inner membrane forms many enfoldings called cristae in the inner mitochondrial matrix. This serves to increase the surface area of inner membrane on which membrane-bounded reactions can take place. That's why option D, occurrence of chemical reactions, is the correct answer. In the chloroplast of a plant cell, if thylakoid membrane is damaged, then this will directly affect the, as you know, light reactions take place on the thylakoid membranes of chloroplast. That's why given options में से जो correct answer है वो है option D, that is light dependent reactions. Krebs cycle occur in mitochondria. Calvin cycle, that is dark reactions, take place in the stroma of the chloroplast. Process of glycolysis occur in cytoplasm. That's why option D, light dependent reactions, is the correct answer. हमने कैसे पहचाना किस कीवर्ड से? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज डैमेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ स्टर्नस एक्सरसाइज एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हेल्प्स इन द गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। As you know, ATP is generated by energy releasing processes and is broken down by energy consuming processes. In this way, ATP transfers energy between metabolic reactions. Next question, dark reactions of photosynthesis involve the given options में से जो correct answer है वो है option A, that is utilization of ATP. बाकी सारे ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑप्शन सी लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन,
ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ NADPH। ये तीनों ऑप्शंस रेलेवेंट है लाइट रिएक्शन से। हमसे डार्क रिएक्शन से रेलेवेंट पूछा था, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। Dark reactions of photosynthesis involve the utilization of ATP. Means option A is the correct answer. Next question. During photosynthesis, oxygen gas is released by the splitting of given options में से जो correct answer है वो है option B, that is water molecules. Option B is the correct answer. As you know, light breaks water molecule, that is photolysis, and oxygen is released during light reactions. That's why option B, water molecules, is the correct answer. Next question. In the absence of Calvin cycle of photosynthesis, the plant will be unable to, given options में से जो correct answer है वो है option A, that is synthesize glucose. Means option A is the correct answer. As you know, photosynthesis occurs in two phases. During first phase, light energy is captured and is used to make high energy molecules, that is ATP and NADPH. These reactions, which are known as light reactions, take place on the thylakoid membranes of chloroplasts. During second phase, carbon dioxide is reduced to make glucose. In this phase, the energy from high energy molecules, that is ATP and NADPH, is utilized. Since these reactions do not use light directly, they are known as dark reactions or Calvin cycles. The dark reactions takes place in the stroma of the chloroplast. Means option B, C, D relevant है light reaction से और option A relevant था Calvin cycle dark reaction से. That's why option A, synthesized glucose, is the correct answer. Next question. In anaerobic respiration, the total net yield of ATP molecules after the oxidation of a glucose molecule is, given options में से जो correct answer है वो है option A, that is 2. Means option A, 2 is the correct answer. Next question. The given graph shows the effects of different levels of factors on the rate of photosynthesis. Based on the given graph, it can be inferred that the rate of photosynthesis, हमें क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे लाइट इंटेंसिटी गिवन है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमें नजर आ रहा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेम है, दैट इज 0.03%, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है 20 से 30 डिग्री, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज कर रहा है. अगर टेम्परेचर सेम है, दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है 0.03% से 0.13%, तो भी हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है. इसलिए जो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली विद द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Next question. The given diagram shows some events of anaerobic respiration. Which process and byproduct formation occurs at X and Y respectively? As you know, in glycolysis, a molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid. Means process X is glycolysis. In alcoholic fermentation, pyruvic acid is further broken down into alcohol and carbon dioxide. Means byproduct Y is carbon dioxide. हमारे दोनों करेक्ट आंसर, दैट इज प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस एंड बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए में थे. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. In the human respiratory system, gaseous exchange takes place between the given options में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज alveoli and capillaries. Means option A, alveoli and capillaries, is the correct answer. In the human respiratory system, gaseous exchange takes place between the alveoli and capillaries. Next question. The respiratory disorder in which bronchioles become inflamed and narrow is, given options में से जो correct answer है वो है option A, that is asthma. As you know,
Asthma is a form of allergy in which there is inflammation of the bronchi, more mucus production, and narrowing of the airways. That's why option A, asthma, is the correct answer. Next question. In the human respiratory system, the function of epiglottis is to given options में से जो correct answer है वो है option D, that is prevent the food particles from entering the trachea, means option D is the correct answer. The function of epiglottis is to prevent the food particles from entering the trachea, means option D is the correct answer. Next question. Which of the following is correct about the change in the pressure and volume of thoracic cavity during exhalation? प्रेशर इंक्रीज होगा थोरेसिक कैविटी में इन एक्सहेलेशन और वॉल्यूम डिक्रीज होगा. हमारे दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में थे. दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर. एज यू नो, आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, द impure air is expelled out in exhalation. The rib muscles relax, bringing the ribs back to the original position. The diaphragm muscles also relax and it gets its raised dome shape. This reduces the space in the chest cavity, that is thoracic cavity, and increases the pressure on lungs. The lungs contract and the air is expelled out of them. That's why given options में जो correct answer है वो है option B, that is pressure in thoracic cavity increases, volume of thoracic cavity decreases, means option B is the correct answer. Phosphorus is classified as a macronutrient for plants because it is given options में से जो correct answer है वो है option A, that is required in large amount, means option A is the correct answer. Next question. Phytonadione is a medicine that is prescribed to patients with blood clotting problems. The vitamin which plays a similar function to phytonadione is given options में से जो correct answer है वो है option D, that is vitamin K. हमने blood clotting से identify किया, correct answer option D है, that is vitamin K. Next question. Sarosh eats a slice of white bread with butter and grilled beef in her breakfast. The nutrient which is present in least amount in her breakfast is bread is a source of carbohydrates, butter is a source of lipids, beef is a source of proteins. तो जो सबसे कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो है फाइबर्स. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी फाइबर्स इज द करेक्ट आंसर. Next question. The part of the human digestive system where the digestion of proteins begin is given options में से जो correct answer है वो है option C, that is stomach. C, stomach is the correct answer. As you know, when food enters stomach, the gastric glands found in the stomach wall are stimulated to secrete gastric juice. Gastric juice is composed chiefly of mucus, hydrochloric acid, and a protein digesting enzyme pepsinogen. Hydrochloric acid converts the inactive enzyme pepsinogen into its active form, that is pepsin. Pepsin partially digests the protein portion of food into polypeptides and shorter peptide chains. That's why option C, stomach, is the correct answer, where the digestion of proteins begin. Next question. The correct pathway for the food bolus to enter stomach is given options में से जो correct answer है वो है option B, that is esophagus cardiac sphincter, means option B is the correct answer. Bolus enters stomach from esophagus through cardiac sphincter, means option B is the correct answer. As you know, stomach has two main portions. Cardiac portion of stomach is present immediately after esophagus and pyloric portion is located beneath cardiac portion. Stomach has two sphincters openings which are guarded by muscles. Cardiac sphincter is between stomach and esophagus,
while pyloric sphincter is between stomach and small intestine. Bolus enters stomach from esophagus through cardiac sphincter. That's why option B is the correct answer. Next question. The given graph shows the optimum activity of two enzymes at different pH in the human digestive system. The option that correctly identifies the parts of digestive system where enzymes 1 and 2 work is rate of reaction, pH given है. हमें नजर आ रहा है एंजाइम 1 अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी एसिडिक पीएच में शो कर रहा है, इसलिए स्टमक इज शॉर्टलिस्टेड. एंजाइम 2 अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी न्यूट्रल पीएच में शो कर रहा है, इसलिए हमने माउथ को शॉर्टलिस्ट किया. ऑप्शन ए दोनों करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. एंजाइम 1 स्टमक, एंजाइम 2 माउथ, मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Next question. The part or parts of the human digestive system where both chemical and mechanical digestion of food take place is slash are given options में से जो correct answer है वो है option C, that is stomach and mouth, means option C is the correct answer. Stomach and mouth are the parts of the human digestive system where both chemical and mechanical digestion of food take place, means option C is the correct answer. Next question. The given diagram represents the pathway of blood flow from the small intestine to the vena cava, small intestine to liver, liver to vena cava. The option that is correct about vessel Y is identification of Y. Y is hepatic portal vein. कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड वाई ग्लूकोज. ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, जो दोनों करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है. एज यू नो द डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स दैट इज सिंपल शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन विलाई. ब्लड कैरीज देम अवे फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द hepatic portal vein and goes to liver for filtering. That's why option C is the correct answer. Next question. The given diagram illustrates a process that occurs in the digestive system of human beings. This process is called, given options में से जो correct answer है वो है option C, that is emulsification. C, emulsification is the correct answer. As you know, bile from liver helps in the digestion of lipids through emulsification, that is by keeping the lipid droplets separate from one another. That's why C, emulsification is the correct answer. The given diagram represents cross-section through a young non-woody dicot stem. In this diagram, the vascular bundle is labeled as given ऑप्शन ए बी सी डी में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्कुलर बंडल को, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन एक्सपेरिमेंट अ थिन लेयर ऑफ पेट्रोलियम जेली वेस्लिन इज यूज्ड टू कवर द अंडरसाइड ऑफ लीव्स. हाउ डज दिस एप्लीकेशन अफेक्ट द प्लांट्स फिजियोलॉजी. गिवन ऑप्शन ए बी सी डी में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज it reduces transpiration rate. Option C, it reduces transpiration rate is the correct answer. Next question. Following are the parts of a growing plant: roots, mature leaves, tubers. In the middle of growing season, the part or parts which act or acts as a source is slash R. Given option A, B, C, D में से जो correct answer है वो है option B, that is 2 only. Only mature leaves act as a source in the middle of growing season, means option B, 2 only is the correct answer. Next question. Diagram 1 represents a plant in wilted state, while diagram 2 represents the same plant in the normal state. Which of the following conditions are required for the plant shown in diagram 1 to regain the state shown in diagram 2? Diagram 1 में plant wilted है,
और हम चाहते हैं प्लांट नॉर्मल स्टेट में आ जाए जैसे डायग्राम 2 में, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज। ऑप्शन बी दोनों करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज्ड, rate of transpiration decreased, means option B is the correct answer. Next question. The given flow chart shows the pathway of blood through heart and lungs. The part of heart which has the thickest walls and the highest internal pressure is labeled as right atrium से blood move करता है, right ventricle से pulmonary trunk, pulmonary trunk से पल्मोनरी आर्टरी की मदद से ब्लड जाता है लंग्स में, देन लंग से पल्मोनरी वेन की मदद से ब्लड एंटर होता है लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। हमसे पूछा गया है थिकेस्ट वॉल किसकी होगी और कहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनल प्रेशर होगा। एज यू नो द वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आर द थिकेस्ट वन, दिस आर about a half inch thick. They have enough force to push blood into the body. तो means left ventricle option 4, that is option D represent करा है. That's why D4 is the correct answer. Next question. Consider the given characteristics of a blood vessel. Blood pressure low, concentration of oxygen high, target organ heart. The blood vessel identified is ब्लड प्रेशर लो है तो मीन्स ये आर्टरी नहीं हो सकती क्योंकि आर्टरी में ब्लड प्रेशर हाई होता है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हाई मीन्स ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो फीमोरल वेन भी नहीं हो सकती। टारगेटेड ऑर्गन हार्ट है मीन्स पल्मोनरी वेन इज द करेक्ट आंसर क्योंकि पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। दैट्स वाई ऑप्शन डी पल्मोनरी वेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. In the human circulatory system, the blood vessel which has the highest blood pressure is the given option A, B, C, D में से जो correct answer है वो है option A, that is aorta. Aorta has the highest blood pressure, means option A is the correct answer. Next question. The given diagram represents the regulation of blood flow in a vein. What would be the condition of valves X and Y when the adjacent skeletal muscles are contracted and the flow of blood is towards the heart? Skeletal muscles contract करें, blood का flow towards the heart है और हमें X और Y valve की condition बतानी है। X valve तो confirm open होगा, Y valve open भी हो सकता है, close भी हो सकता है। मार्किंग स्कीम के मुताबिक A और D दोनों आंसर्स करेक्ट है बट आप कोई एक मार्क करेंगे, आइदर ए और डी, दोनों नहीं मार्क करके आएंगे। ए भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, जस्ट मार्क वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन हार्ट. विच ऑफ दीज लेबल्ड वेल्व्स आर करेक्टली अलाइंड विद देयर फंक्शन? राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी ट्रंक. राइट वेंट्रिकल ये है, पल्मोनरी ट्रंक ये है। इसके दरमियान कौन सा वेल्व है, कौन सा लेटर रिप्रेजेंट करा है वेल्व को? लेटर आर, मीन्स आर इज शॉर्टलिस्टेड। लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा, तो कौन सा लेटर रिप्रेजेंट करा है? पी। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो करेक्ट लेटर्स को शो कर रहा है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, एओर्टा। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व होता है, जो लेटर एस रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है ट्राइकस्पिड वेल्व। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान जो वेल्व होता है, जो लेटर आर रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व होता है, जिसको लेटर क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है बाइकस्पिड वेल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान जो वेल्व है, जिसको लेटर पी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका नाम है एओर्टिक सेमीलूनर वेल्व। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट वेल्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है लेटर आर और लेटर पी, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Alternate to practical ETP.
The diagram represents an experimental setup for the demonstration of osmosis. In contrast to the solution in the beaker, the solution in the crystal funnel is given options में से जो correct answer है वो है option D, that is hypertonic. As you know, osmosis is the movement of water across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration, that is hypertonic. हमें osmosis को demonstrate करना है और हमें movement of water को देखना है. इस वजह से जो crystal funnel में जो solution है वो क्या है, hypertonic है, means higher solute concentration है उसकी, means option D is the correct answer. Next question. 4 potato cubes W, X, Y and Z were immersed in separate beakers, each containing iodine solution. After 15 minutes, they were taken out. All cubes were then cut into half to see the depth of diffusion. The given table shows the result of this experiment. The cube that has absorbed the iodine solution at the most efficient rate is potato cubes. उनकी लेंथ गिवन है एक साइड की, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो गिवन है, डेप्थ ऑफ डिफ्यूजन गिवन है. सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो W का सबसे ज़्यादा है और डेप्थ ऑफ डिफ्यूजन भी W की सबसे ज़्यादा है, बट हमने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो से आइडेंटिफाई किया जो हमारा करेक्ट आंसर है गिवन ऑप्शन में से वो है ऑप्शन ए, दैट इज W. मीन्स ऑप्शन ए W इज द करेक्ट आंसर. Next question. The given diagram represents a microscopic view of one of the types of muscle tissues. This type of muscle tissue is present in, हमें स्ट्राइप्स नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं जो रिप्रेजेंट करें स्केलेटल मसल्स को, इसलिए जो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ट्राइसेप्स. एज यू नो, skeletal muscles or straight muscles are attached to bones. Their cells are straight, striped, and contain many nuclei. They are responsible for the movements of bones. That's why option B, triceps, is the correct answer. Next question. The given image shows an experimental setup in which a de-starched plant is kept in the sunlight for a day, and an iodine test was conducted on the experimental leaf. The option that correctly identifies the part of experimental leaf which shows the presence of starch and the reason of this result is, given options में से जो correct answer है वो है option A, identification. 1 और reason क्या है, it obtained the required sunlight to synthesize starch, means option A is the correct answer. हमने डी स्टार्च प्लांट को सनलाइट में रखा, उसके कुछ पार्ट को ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर किया, तो जो पार्ट ब्लैक स्ट्रिप से कवर है उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, तो मीन्स स्टार्च नहीं बनेगा वहाँ पे, तो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, मीन्स इस पोर्शन में हमें आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा. जबकि ये पोर्शंस क्या है, ओपन है, तो यहाँ पे सनलाइट होगी तो स्टार्च भी फॉर्म होगा, तो यहाँ पे आयोडीन टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. इसलिए हमने 1 को आइडेंटिफाई किया, 1 शॉर्टलिस्ट किया, और रीज़न क्या था, उसको सनलाइट मिल गई है जो उसे स्टार्च बनाने के लिए चाहिए. आपको पता है फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोज दैट हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग respiration in germinating peas. The given result is obtained after keeping this setup for 3-4 days, which is inaccurate. Temperature: vacuum flask containing boiled seed 25 degrees centigrade, vacuum flask containing germinating seeds 24 degrees centigrade. Which of the following would be the possible reason for increased temperature in the vacuum flask containing boiled seeds? जो फ्लास्क बॉइल्ड सीड कंटेन करिए उसका टेम्परेचर राइज नहीं करना चाहिए, बट उसका टेम्परेचर इंक्रीज है, तो हमें उसका रीज़न पहचानना है. तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज सम बैक्टीरिया माइट बी प्रेजेंट इन द फ्लास्क, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज करें,
means option A is the correct answer. Next question. A variegated leaf is used to investigate the factor necessary for photosynthesis because a variegated leaf given options में से जो correct answer है वो है option D, that is contains some green and white patches, means option D is the correct answer. A variegated leaf is used to investigate the factor necessary for photosynthesis because a variegated leaf contains some green and white patches. Next question. Given is the microscopic image of the transverse section of a part of the human small intestine. The labeled part X is identified as. हमें एक विलस नजर आ रहा है और हमें X को आइडेंटिफाई करना है. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज लेक्टिल्स. द लेबल्ड पार्ट X is identified as lacteals, means option A is the correct answer. Next question. A pregnant woman's urine sample was tested positive for Benedict's test. This positive result indicates that the urine sample contains, as you know, हम ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए बेनेडिक्स टेस्ट करते हैं, इसलिए जो गिवन ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ग्लूकोज, मीन्स ऑप्शन बी ग्लूकोज इज द करेक्ट आंसर. पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है मीन्स यूरिन सैंपल के अंदर ग्लूकोज मौजूद है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन डायग्राम शोज आयोडीन टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन अ फूड सैंपल. द फूड सैंपल एक्स वुड बी. जब फूड सैंपल एक्स पे हम आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करें तो हमें ब्लू ब्लैक कलर नजर आ रहा है, जो किसकी प्रेजेंस को शो करा है, स्टार्च की. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मीन्स हमें गिवन ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन पहचाना था जो स्टार्च का मेजर सोर्स हो, जो था ऑप्शन सी ब्रेड क्रम्स. चीज, नट्स पाउडर, स्क्रैम्बल्ड एग्स मेजर सोर्स नहीं है स्टार्च के, ऑप्शन सी है. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी ब्रेड क्रम्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन इमेज shows an experimental setup to investigate transpiration in plants. After few hours, the color of cobalt chloride paper changes from blue to pink. This change of color is due to the, as you know, cobalt chloride paper is used for testing for water leaks. Water turns blue cobalt chloride paper pink. That's why given options में से जो correct answer है वो है option B, that is water vapors produced by the leaves, means option B is the correct answer.